Hello and welcome to CVR News Network. You are watching CVR English and these are the details of the outside news. Union Minister Hardeep Singh Puri addressed the Clean Cooking Ministerial event during the India Energy Week 2025, discussing the significant expansion of LPG connections in India. Reflecting on his university days, Puri recalled the challenges of obtaining an LPG cylinder, which required extensive connections. He noted that when Prime Minister Modi took office, there were 140 million LPG connections, but today that number has surged to approximately 330 million, covering near entirely the entire population of India. Puri emphasized that under government schemes, economically weaker sections can access clean cooking gas at an affordable rate of just 7 cents a day, depending on the exchange rate. Before the third edition of India Energy Week started, I was asked by my friends in the fourth estate, the press, what do you think is going to be the main issue? So, depends on whom you are speaking to. I was tempted to say then, but I am saying now. By the way, this is no longer a private session. This is open to the press, so we should all be aware of that. I want to first welcome my distinguished colleagues, the ministers who are present and who have very kindly agreed, and other representatives on this table. Why is this subject so important? One, because I think we have a situation in which, in spite of all the progress that's been made around the world, 2.3 billion people continue to use polluting fuels such as charcoal, wood, and animal dung during the and with all the consequences on health, gender, environment, all the problems. So that's a given fact. And that, I think, reflects very poorly on our collective management. That's the first submission I make. Secondly, if you look at the various calculations, how many people have suffered adverse or injurious consequences to the health, there are 3 million premature deaths annually, according to one estimate. IEA says 3.7, UNEP says 3.1, with women and children being the most disproportionately impacted. More than that, if you look at gender focus, you have a situation in which some of our sisters or daughters spend 5 hours a day collecting fuel and preparing meals, etc. So what a waste of, good human effort that entails. Nearly half of all ambient air pollution, exacerbating respiratory illnesses, environmental degradation. Now, I could go on giving the statistics, but I think they're in the public domain. Let me fast forward to India. Why do I think that in all the work that we've done on energy, why is this something which I think is one of my favorite aspects? And I take no credit for it. I've been part of this ministry only 3.5 years. It started well before me. Let me go back to my days as a student, even when I was in the university. To get a cylinder of LPG, liquefied petroleum gas, which is a product of a refinery, you required a lot of connections. You required you need to know. Defence Minister Rajnath Singh conducted a bilateral meeting with the defence ministers of several countries on the sidelines of Aero India 2025. The meeting was attended by prominent figures including the OPA Muchinguri Kashiri, Minister of Defence from Zimbabwe, Lieutenant General Mohsen Mohammad Hussein Al-Dairi, Minister of Defence from Yemen, Engineer Aisha Mohammed, Minister of Defence from Ethiopia, Sering Modu Niji, Minister of Defence from Gambia, and Bridget Onkanova, Minister of National Defence from Gabon. The discussions focused on strengthening defence cooperation and fostering international ties.
Congress leader Sachin Pilot acknowledged the party's poor performance in the recently concluded Delhi elections, noting that the Congress government had been in power for 3 consecutive terms in the past and had a strong support base in the city for decades. He pointed out that the change in the governments with AAP's defeat in the election and emphasized that Congress entered the race to build its previous position. Pilot proudly stated that despite the challenging political landscape, the party's vote share has increased by 30%. हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग वहां चुनाव लड़े थे अपनी पुरानी जमीन तलाशने के लिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही और दशकों से वहां पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। पिछले कुछ चुनावों में हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहां पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए, हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहाँ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। भविष्य में भी हमारा वोट लगभग 30% बढ़ा है पिछली बार से, तो उसमें हम और काम करेंगे और आने वाले हर चुनाव में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami expressed his request to Prime Minister Narendra Modi for a visit during the winter travel season, highlighting the potential benefits for the state. Dhami emphasized that whenever Prime Minister visits any location, it attracts global attention, which would help in promoting the state's tourism and overall growth. He further stated that the Prime Minister visit would contribute significantly to the rapid development of Uttarakhand, positioning it as a key destination for both national and international audiences. यात्रा का जो शुभारंभ पिछले 2024 दिसंबर से प्रारंभ किया है, वो हमारे राज्य के लिए बहुत समृद्धि का कारण आने वाले समय में बनने वाली है। उसका एक बहुत अच्छा अनुभव है और पूरे वर्ष भर यात्रा चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि आप भी शीतकालीन यात्रा में कभी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का बहुत इससे जो है ब्रांडिंग होगी पूरे विश्व के अंदर। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आदि कैलाश गए, चाहे माणा गए या केदारनाथ में उन्होंने गुफा में प्रवास किया, तो उसके बाद वहां पर यात्रियों की संख्या, तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा में आएंगे तो निश्चित रूप से राज्य की समृद्धि में बहुत तेजी से विकास होगा। देखिए, इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा का जो शुभारंभ पिछले 2024 दिसंबर से प्रारंभ किया है, वो हमारे राज्य के लिए बहुत समृद्धि का कारण आने वाले समय में बनने वाली है। उसका एक बहुत अच्छा अनुभव है और पूरे वर्ष भर यात्रा चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि आप भी शीतकालीन यात्रा में कभी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का बहुत इससे जो है ब्रांडिंग होगी पूरे विश्व के अंदर। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आदि कैलाश गए, चाहे माणा गए या केदारनाथ में उन्होंने गुफा में प्रवास किया, तो उसके बाद वहां पर यात्रियों की संख्या, तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और Rajasthan Minister Kirori Lal Meena addressed the show cause notice issued by the BJP confirming that he had responded but chose not to share the details publicly, citing concerns over further allegations of indiscipline. He stated that the party leadership will ultimately decide whether its actions constituted indiscipline. Meena also clarified that he did not request a meeting with BJP National President JP Nadda, though the state BJP President has forwarded his response to Nadda. Meena remained composed, asking, "Would I be smiling this much if I was upset?" क्या जवाब मिला? वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। आपने आरोप लगाया कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की है? वो तो देखो नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आप? ना, मैंने नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजी आपने? मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने
कल जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब क्यों आई सारी नौबत, ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में, 7 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने हंगामा किया। अब वो तो कांग्रेस वालों से पूछो हंगामा क्यों किया। डॉक्टर आपने कहा कि क्या आप आपने तथ्य भी नाराज दिए, हो गए? बार बार ये सवाल आ रहा है कि हाँ। डॉक्टर साहब फोन टैपिंग आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है, इस तरीके नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं कही। जासूसी हो रही मैंने नहीं कही, बात है। जासूसी हो रही क्या? हैं? जासूसी हो रही घर के बाहर से चोरी करवा दी। इतने जासूस है वो ना, आप जासूसी और क्या? मीडिया वालों का जिक्र करें। मीडिया को जासूस नहीं, आप वैसे जासूस हैं। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो अपने घर के बाहर लगातार। अरे माइक नीचे करो, माइक नीचे करो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है? ऐसा कुछ कह रहे हैं कि साहब अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? नहीं, वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। रोशन जी माइक आई करो। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने का। अब क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा नहीं। कोई नाराजगी है अभी भी आपकी? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। नहीं, आज से तो आप वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, वो तो आपने बोला ना वीडियो आ रहा है। ये जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पर निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। हाँ, नोटिस का जवाब। DCP Kumar Singh of Southeast Delhi provided an update on the investigation involving AAP MLA Amanatullah Khan, stating that the authorized are actively working to track him. Singh confirmed that Khan has been served with a notice in connection with the ongoing case and efforts are being made to gather further details as part of the investigation. The police are continuing their inquiries to ensure proper legal proceedings. मुझे जो है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सर 48 घंटे से ज्यादा बीत अमानुतुल्लाह खान फरार हैं। कहां तक से आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? किस तरह की लीड्स मिली हैं? ये अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। शाहजेब जो है वो एक वांटेड अक्यूज है, उसका अमानुतुल्लाह खान से क्या रिश्ता है, वो उससे क्यों सेव करना चाह रहे थे? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे चल रही है। जब इसमें कोई जिस कांटेक्ट हो पाएगा, जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। उनके घर के बाद आया गया है जी, उनको नोटिस दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। सर, आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोई चिट्ठी जो अमानुतुल्लाह खान या आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी है, क्या आपको कोई ऐसी जानकारी मिली है? इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। लेकिन मुझे मीडिया सूत्रों से मिली, मेरे पास अभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई। क्या कमिश्नर ऑफिस वहां पर रिसीव कराई गई हो? सर, एक नोटिस अभी दिया जा चुका है। सर, क्या कमिश्नर ऑफिस ये कहा गया है कि कमिश्नर ऑफिस शिकायत दर्ज कराई गई है कि पुलिस उन्हें गलत मुकदमा बनाकर फंसाना चाहती है, तो क्या कमिश्नर ऑफिस पर रिसीव नहीं हुई है या आपके एंड पर रिसीव नहीं हुई है या दिल्ली पुलिस को शिकायत रिसीव नहीं हुई है? मुझे ऐसी अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। कोई और सेक्शन इंपोज करना चाहेंगे इस केस के? मकोका लगाने की क्या तैयारी है सर? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं। सर, एक क्वेश्चन और है सर, जो जिस तरह से एक्यूज है, क्या वो पीओ है? उसके बारे में बता सकते हैं? अमानुतुल्लाह खान ये कह रहा है कि उसको बेल मिल चुकी है, तो थोड़ा कोर्ट का प्रोसेस क्या रहा है? क्या वो पीओ था? इसका थोड़ा बता सकते हैं सर? ये अभी जांच का विषय है, मैं इस पे कमेंट बाद में करूंगा। सर, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, तो क्या कोर्ट की, क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट घोषित करता है, अमानुतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि उसको उस मामले में बेल मिल गई थी, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि सीक्वेंस क्या होता है। आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया, बेल मिल गई, तो उसके बाद वो पीओ डिक्लेयर हुआ, वो क्या कॉन्ट्राडिक्शन? देखिए, वो जो पीओ है, प्रोसीडिंग कोर्ट ने उसको, पीओ के ऑर्डर्स थे, जो टीम आई थी, पीओ टीम थी जो पीओ को पकड़ रही थी, उनके पास प्रॉपर ऑर्डर्स थे, और अगर इस तरह का कोई ऑर्डर था भी कोर्ट की तरफ से तो उसको वेरीफाई किया जा सकता था, थाने लाके उसको प्रॉपर एक उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती थी, दिखाया जा सकता था। इस तरह का कोई ऑर्डर दिखाया नहीं गया है, और जो है हम लोगों के पास प्रॉपर ऑर्डर थे टीम के, जब उसको हम लोग उससे पूछताछ कर रहे थे। साबिज और अमानुतुल्लाह के बीच सर क्या लिंक है, क्या संबंध है? देखिए, ये जब एक बार पूछताछ में सामने आएंगे तभी इस पे मैं कमेंट कर पाऊंगा। देखिए, ऐसी अभी तक कोई चिट्ठी मुझे जो है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सर, 48 घंटे से ज्यादा बीत अमानुतुल्लाह खान फरार हैं। कहां तक से आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? किस तरह की लीड्स मिली हैं?
देखिए अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। शाहरिज जो है वो एक वांटेड अक्यूज्ड है, उसका अहमदुल्ला खान से क्या रिश्ता है, वो उससे क्यों सेव करना चाह रहे थे? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे चल रही है। जब इसमें कोई जिससे कांटेक्ट हो पाएगा, जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। उनके घर के बाद आया गया है जी, उनको नोटिस दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। सर आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोई चिट्ठी जो अहमदुल्ला खान या आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी है, क्या आपको कोई ऐसी जानकारी मिली है? इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए मुझे मीडिया सूत्रों से ही मिली, मेरे पास अभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई। क्या कमिश्नर ऑफिस पर वहाँ पर रिसीव कराई गई हो सर? एक नोटिस अभी दिया जा चुका है। सर क्या कमिश्नर ऑफिस, ये कहा गया है कि कमिश्नर ऑफिस शिकायत दर्ज कराई गई है कि पुलिस उन्हें गलत मुकदमा बनाकर फंसाना चाहती है, तो क्या कमिश्नर ऑफिस पर रिसीव नहीं हुई है या आपके एंड पर रिसीव नहीं हुई है या दिल्ली पुलिस को शिकायत रिसीव नहीं हुई है? मुझे ऐसी अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। कोई और सेक्शन इंपोज करना चाहेंगे इस केस के? मकोका लगाने की क्या तैयारी है सर? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं। सर एक क्वेश्चन और है सर, जो जिस तरीके से एक्यूज है, क्या वो पीओ है? उसके Advocate H.S. Fulka praised the conviction of former Congress MP Sajjan Kumar by the CBI Special Court for his involvement in the 1984 anti-Sikh riots, particularly by the murders of Jashwant Singh and his son Tarandeep Singh. Fulka noted that the case, which had been closed by the police, was reopened after the Modi's government appointment of a special investigating team in 2015. He expressed gratitude to the court, prosecutor Manish Rawat and investigating officer Jagdish Kumar for their dedicated efforts in bringing justice. The court will pronounce the sentence on February 18th. Court Judge Kaveri Baveja has convicted Sajjan Kumar for the murder of two Sikhs in 1984, Sikh genocide. Now this is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. This case was reopened. Now we are so grateful to the court. We are also grateful to the public prosecutor Manish Rawat and the IO Jagdish Kumar, who worked very hard on this. I am also grateful to my colleague Kamra Bora and Gurbakh Singh, who have also worked very hard on this. Now on 18th February, the court will pronounce the sentence. Sir, it has been a long-drawn battle for you. That is true. In fact, after such a long time, justice though has no meaning, but it doesn't mean that these guilty should go scot-free. They should be punished, and this will also send a message to other people in the country that if you are in the power, don't think you can get away after committing such heinous crime. A day will come when you will have to face the law. Today the CBI Special Court Judge Kaveri Baveja has convicted Sajjan Kumar for the murder of two Sikhs in 1984, Sikh genocide. Now this is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. This case was reopened. Now we are so grateful to the court. We are also grateful to the public prosecutor Manish Rawat and the IO Jagdish Kumar, who worked very hard on this. I am also grateful to my colleague Kamra Bora and Gurbakh Singh, who have also worked very hard on this. Now on 18th February, the court will pronounce the sentence. Sir, it has been a Karnataka Home Minister G. Parmeshwara addressed the attack on the Mysore Udaiguri police station, stating that those responsible for taking the law into their own hands have been identified through CCTV footage. He confirmed that 5 to 6 individuals have been taken into custody in connection with the incident. Parmeshwara emphasized that in such cases, no one would be spared, highlighting the state's commitment to upholding the law and ensuring the accountability for those involved in the attack. Arrested. And because of his arrest only, this whole thing started. And, all those people who tried to take the law and order into their hands, they have been identified through the, CCTV footage.
and 5 or 6 people have already been taken into custody. And we don't spare anybody. In an incident like this, trying to attack the police station, that means it's a challenge to the police. We don't spare anybody. Whichever group they belong to, we don't really care. Of course, BJP may say that you are trying to protect somebody and all that. Those things will not work in law and order situation. So we will definitely, we are very serious about it, and we will definitely take serious steps on this. Things like this we don't tolerate. So even though the DJLA, KJLA case happened during the BJP regime, they still claim that such a situation is arising because of the government's soft nature towards one particular community. No, we are not. We are not. See, law and order or law of the land is same to everybody. We don't spare anybody if they go and break the law. Why should we? Why should we spare anybody or say soft to one community, hard to one community? No, it doesn't work that way when you maintain law and order. So we are serious about it, and we will not tolerate this kind of things in the state. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has welcomed Prime Minister Narendra Modi's visit to Marseille, France, highlighting its historical significance linked to Veer Savarkar. The MP stated there is nothing wrong with the PM visiting the place from where Veer Savarkar escaped. It's a matter of pride for us. Savarkar's daring escape from a ship in the port of Marseille during his struggle against the British rule remains a key chapter in India's freedom movement. PM Modi's visit to the city has sparked political discussions with various parties, interpreting its significance differently. Shiv Sena MP has supported Prime Minister Narendra Modi's visit to Marseille, France, citing its historical link to Veer Savarkar. वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं उस स्थान पर जहां वीर सावरकर जी हाथ में बीड़िया उनकी थी और वो बोट से जा रहे थे और चकमा देकर उसने बोट से छलांग मारकर वो स्विमिंग करके वो किनारे पर आ गए। ये बहुत बड़ा फिर वहाँ मुकदमा चला उनके ऊपर। अगर प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। हम सब के लिए वो गर्व की बात है। कांग्रेस जो मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज कर कांग्रेस ने बोला है कि ये करके नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि भारतीय लोग कावर्ड डरपोक हैं। इस तरह से वीर सावरकर ने भी वीर सावरकर इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सेनानी नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे। उनके जो विचार थे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, क्रांतिकारक रहे। सर, एकनाथ शिंदे जी को जो है ऑनर किया गया है महाजी शिंदे राष्ट्रीय गर्व अवार्ड से, जिसपे जो शरद पवार जी ने भी उन्हें कमेंट किया। किस तरीके से आपको किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं। Haryana Minister Anil Vij addressed the show cause notice issued by the BJP, clarifying his actions. He said that he was in Bengaluru for last 3 days and returned last night and went to his home where took a bath and had a meal, later replied to the show cause notice. Today he has sent a reply before the given time. He stated that Vij's response come after the party issued the notice regarding certain remarks and actions. The minister emphasized that he has complained with the deadline to submit his explanation. The issue is now expected to be reviewed by the party leadership, which further assured that his reply was submitted in a timely and respectful manner, stressing that he has always maintained his commitment to a party discipline. BJP leaders are likely to assess his explanation in the coming days to decide further action. मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था। And that's the end of the Inside News. Keep watching CVR News English.